Thank you, sir. Good evening, everyone. First, my deep gratitude to Dr. Hanneman, sir, and to all respected mentors and doctors of our HHS group. Today, we have Anita Bajaj, ma'am, to present a case in series Ma Tujhe Salam series. She is the senior most doctor from Mumbai, and it is my great pleasure to welcome you, ma'am. On behalf of entire HHS team, I extend my warm welcome. We are delighted and grateful for you to share your knowledge and experience with us today. And your dedication and expertise are truly inspiring. Welcome, ma'am. Thank you. थैंक यू एवरीवन। माँ तुझे प्रणाम के मौके पे सबको नवरात्रा की शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस राइट अवे। ये जो केस है वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन का है जो कि एक इंस्टीट्यूट में मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बट डायरेक्ट पहचान या डायरेक्ट बात वगैरह कभी की नहीं है। ग्रुप में होने की वजह से नाम वगैरह जानते हैं। तो उसका सडनली एक बार फोन आया और उसने मुझे बोला कि शी नीड्स हेल्प। तो देन शी वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग हर कंप्लेंट्स। तो उसको लास्ट 5 दिनों से बुखार था, हाई फीवर 102 to 103, and it was not even coming down after taking crocin. So she was taking 1.5 crocin, and after 1.5 crocin also fever used to subside only for 1.5 to 2 hours, and again it used to come up. So, and in last 4-5 days, she has taken so much allopathy, Dolo and Crocin, that she's now like she feels कि अरे मैंने आज तक इतनी दवाइयाँ एलोपैथी की खाई नहीं है, and she can't even swallow tablets, so she has to crush it, make powder and then take it. तो उसकी वजह से उसको लग रहा है कि काफी मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, and taste is very bitter in her mouth. She cannot eat anything. Now she said कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रही और मुझे इतनी गोलियां एलोपैथी की खानी पड़ रही है। तो that was one thing, and then she described her physicals, like because that group where I was attached earlier, we used to prescribe on physicals and keynote. So she went on describing her fever. Like her head is too hot, palms and soles used to be very cold when the fever started. She feels very weak, cannot move, head heaviness. So she took Bryomia also because with movement it was getting aggravated. And then she took Gelsemium because she had drooping eyelids, but there was no change. And then she said कि I feel bad कि खुद को ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं. And then there was a like that this type of laughter was there. I have the audio, but patient being physician, I can't. Then she said because of this, she always gets this legs weakness with fever and legs start paining. So she cannot do any work. She is not able to go to her clinic. And whenever the fever comes down after taking Crocin, she does little work. बोली मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे बस 4 दिनों से सोई हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, कुछ काम ही नहीं किया है, क्लिनिक भी नहीं जा पा रही हूँ। बट आई आस्क्ड हर कि क्लिनिक नहीं जा रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? तो उसने बोला कि मेरे में ताकत ही नहीं है, तो जाने का सवाल ही नहीं है। बट शी फील्स बैड, मैं ऐसे कभी लेट के रही ही नहीं हूँ। आई ऑलवेज डू समथिंग और दी अदर। Then I kept on asking her कि what are the reasons, what is the cause for this fever? Exertion था, कोई stress था, किसी ने कुछ बोला था। तो then she said कि 15 days back her Jethani's mother was not well, so and she had to travel to see her, to sit with her in the hospital for almost a week regularly. और उसके बाद then her sister had some knee issue which she had to be operated. So one day she was with her sister and she was in AC and she traveled in metro. So again it was AC, and after coming back she started having this fever and leg pains and all that. And that day there was little exertion, but she said कि नहीं इतना भी कुछ नहीं था। और वो 7 days का जो था वो तो उसको तो टाइम हो गया था, बीच में गैप आ गया था, तो ऐसे कंटिन्यूअस एक्सर्शन नहीं था।
And about her sister, she said that they were able to manage. My jijaji was there, so he managed. But for her sister-in-law's mom, nobody was there. Brother-in-law and sister-in-law were alone, so patient had to help her, and she likes doing it. So she said कि नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई टायरिंग वगैरह नहीं लगता है. Then I asked her if any other stress was there, so she said कि नहीं, by God's grace everything is fine. And she said, since nothing was helping, I thought of calling you to take homeopathy. Then I asked her, कि 5 days का fever है, तो you didn't do any blood test? She said, no, I was thinking of doing it tomorrow. And while talking on phone also, she was coughing continuously. So I asked her, do you have any wheezing? Or she said, no, there is no wheezing, only cough is there. During fever, otherwise she is very hot, but during fever she feels cold. This is the first time she said, I am feeling cold and I have to cover. And especially I have to cover my head also. Otherwise I never feel so cold. And after temperature comes down, after proceed, she wants fan and she feels hot and she starts sweating. She was insisting on, this, I have never taken so much allopathy in my life. So this is the case. So people have given their understanding. So basically, what struck me was, first thing was that when she said कि अरे अपनी होम्योपैथी से मैं खुद को ही ठीक नहीं कर पा रही हूँ, वो जो ऐसे बोल के जब वो हंसी तो मुझे वो एक एम्बेरसमेंट लगा. वो काफी लोगों ने पकड़ा है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट. दूसरा था कि मेरी साइंस मुझे ही हेल्प नहीं कर रही है. उसने 2-3 दवाइयां चेंज कर करके भी ली. उसने रीजंस भी बताया कि ड्रूपिंग था तो जल्सिमियम लिया, एग्रावेशन मोशन था तो मैंने ब्रायोनिया लिया. तो आई टुक इट एज एलिमेंट्स फ्रॉम फेलियर, लिटरली एंड साइंटिफिक फेलियर. वो रूब्रिक हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. Then I took delusion being injured because with allopathy she was getting constipation and anxiety conscience कि मैं इतनी देर 4 दिन से कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं खाली लेटी पड़ी रही हूँ, which is not my nature. Like I always do something or the other. So anxiety conscience of. Then I also added few physicals like heat accompanied by coldness of feet, head heat accompanied by coldness of feet, then mouth taste bitter. And then she had said, I missed that point by describing the case. She said that because of the bitter taste, she is taking sweetened water with sugar, which she is liking. So I took it as General's Food and Drinks desires sweet drink. So if you put all these, the remedy which comes up is sulfur. So I gave her sulfur. I told her to take sulfur 200, 3 doses at 10 minutes interval and let me know after 2 hours. So after 2 hours her follow-up came. She said fever is same 102 only, but I am feeling little better and head heaviness is better. And she got up and she made dosa for herself and she ate that dosa also. So this was the response in, I think, 1.5 hours. And then I told her to just wait and watch and let me know next day morning. So next day morning when she called up, her temperature had reduced. It was gradually going down. That time she had 100.2 or something. And she said her cough was better, her overall weakness was better, and she was feeling fresh. And cough had become productive. So at night she couldn't sleep because of cough, but now cough has become productive. The phlegm is coming out. So she was feeling better on that account also. So after that, like she asked me ki how you have given the medicine, then I shared repertorization with her, and she was very happy and she felt very, grateful that okay, आपसे सीखने को मिलेगा इस तरह से उसने बोला मेरे को. So this is the case. So first thing is embarrassment. अभी जो वो हंसी थी ना कि मैं खुद को ही ट्रीट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा बोल के जब हंसी थी तो किसी ने वो जोकिंग लिया है, किसी ने लाफिंग एट सीरियस मैटर्स लिया है, बट वो जो हंसी थी ना वो इट वाज ऑफ एम्बेरसमेंट.
कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी खुद को ठीक नहीं कर पा रही, तो वो अपना एम्बेरसमेंट दिखा रही थी, वो हंस के खुद पे ही हंस रही थी. One thing is that. Then second thing is elements from literary and scientific failure. अभी बहुत सारे होम्योपैथ्स को फीवर आता है, वो लोग क्रोसिन खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं और भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, उनको खुद को अपनी टोटलिटी समझ में नहीं आती है. बट इसको क्यों इतना अक्यूटली लग रहा है ना कि मैंने आज तक कभी भी एलोपैथी इतना नहीं खाया है और मुझे एलोपैथी खाना पड़ रहा है, मतलब ये मेरी साइंस का फेलियर है, मेरी सोच का फेलियर है. अभी लिटरेरी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर. हम लोग बोलते हैं ना होम्योपैथी पे कितना सारा लिटरेचर है, तो लिटरेचर में आपके केसेस रहते हैं, एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स रहती है, आपने जो थियोरीज बनाई है वो रहती है, तो दैट इज लिटरेचर. तो हम लोग कभी कभी साइंटिफिकली अगर हमने नहीं भी, हमको रेपर्टराइजेशन में नहीं आया, तो भी हम बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स में किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उसके हिसाब से भी हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं. तो वो एक लिटरेचर वाला चीज हो गया कि आपका वो लिटरेरी एप्लीकेशन है. और कई बार आपकी, अभी जैसे बोलते हैं कि होम्योपैथी इज आर्ट एंड साइंस. सो हमारे पास प्रूविंग के सिम्टम्स तो है. अभी जैसे हम लोग माइंड मेथड में क्या करते हैं, वी स्टडी अ रूब्रिक, उसमें हम लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, उसका ग्रामर भी देखते हैं, वर्ड का फाइनर मीनिंग भी देखते हैं. तो ये हो गया लिटरेरी, उसका जो एप्लीकेशन है वो, कि हम लोग वो उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे. और जो होम्योपैथिक लिटरेचर में दिया हुआ है वो नॉलेज को, वो एक्सपीरियंस को, वो शेयरिंग को, वो अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे. और जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो है जो थियोरीज प्रूव्ड है, जो फैक्ट्स हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है. व्हाट इज साइंस? साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड व्हेन यू कनेक्ट, आपने दो फिनोमेना देखे, कॉज एंड इफेक्ट को कनेक्ट किया और उसको आपने बार बार वो चीज को अप्लाई करके प्रूव किया, जो हम लोग पढ़ते थे इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक. तो जब हनीमैन ने देखा कि सिंकोना से फीवर जाता है और सिंकोना देने से फीवर आता भी है, और वैसे ही उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिससे उनको वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे आए. तो ये हो गया साइंस की कैसे इवॉल्व होता है साइंस. तो यहाँ पे साइंस का फेलियर उसको लग रहा है कि ये कैसा है यार, मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रही हूँ. And that is troubling her most, and because of that failure I have to resort to allopathy, or I have to resort to a different physician. Why she came to a homeopath again? Because she wanted to prove, she wanted कि वो उसकी science failure नहीं है. अभी आप देखो सल्फर में एक रिलीजियसनेस भी है, वो बहुत रिलीजियस और लॉयल रहते हैं चीजों के लिए. तो वो रिलीजियोसिटी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका होम्योपैथी के प्रति जो एक रिस्पेक्ट है या एक जो फीलिंग है, इट इज लाइक उनके लिए वो एक धर्म है, एक रिलीजन है उनके लिए. तो यहाँ पे सल्फर गेट्स वेरी मच अफेक्टेड बाय लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलियर. अभी ये हम और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी कोई पेशेंट आके बोलता है कि मैंने इतना ट्रीटमेंट किया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट किया, कुछ कॉज भी नहीं है, फिर भी मेरे को कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर भी मुझे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है. तो इसको हम जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस में है या कोई भी डिफिकल्ट केसेस हैं, तो वहां पे हम ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक रूब्रिक है. अभी इस रूब्रिक में अगर आप देखेंगे ना तो सब रेमेडीज जो है वो काफी मतलब एक इंटेलिजेंट टाइप की रेमेडीज है जो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं. तो जिसमें वो इंटेलिजेंस होगा वही वो इतना सोच सकेगा कि ये साइंस का कहाँ पे फेलियर है और कहाँ पे फेलियर नहीं है. इसमें सिर्फ एक पल्सिफला जो रेमेडी है ना वो मुझे थोड़ी वो अलग लगी. बाकी आप देखोगे तो उसमें लाइकोपोडियम है, नक्सवामिका है, तो कैलकेरिया, इग्नेशिया, लाइको, नक्सवामिका, पल्सिफला एंड सल्फर. तो अभी जो कैलकेरी रीजनिंग में है, लाइको तो है ही, इमोशंस आर ऑल्सो प्रिडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट. नक्सवामिका भी आपको मालूम है वो काफी पैशनेट है अपनी साइंस और अपने फील्ड के लिए, काफी आर्डेंट रहते हैं.
sulfur, as I said, they are very religious, so they are very loyal to their science, and they are also in philosophy, ability, and theorizing and everything. So ये सब रेमेडीज, 4 रेमेडीज हम समझ सकते हैं, लेकिन इग्नेशिया एंड पल्सिटिला उसका मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा समझाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इग्नेशिया और पल्सिटिला में जो सफरिंग है वो ज्यादा इमोशनल सफरिंग है, या दोनों में हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स या दोनों में फेनिंग भी है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको हो क्या रहा है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस वेयर आई फील अ साइंस में बी फेलिंग, बिकॉज आप अगर चीजों को समझेंगे ही नहीं कि उसका साइकोडायनेमिक्स क्या है, तो फिर आप कैसे उसको ठीक करोगे। तो वहां मुझे ऐसा लगा, लेकिन अगर ऐसा सोचते हैं तो बाकी की हिस्टोरिकल रेमेडीज भी उसमें आनी चाहिए। तो वो दोनों रेमेडीज आई कुडंट एक्सप्लेन ऑनेस्टली, मुझे वो समझ में नहीं आया। किसी और को कोई थिंकिंग उसके बारे में आ रही है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि जो भी इंटेलिजेंट रेमेडीज हैं उनमें ये रूब्रिक ज्यादा मिल सकता है। और मुझे ये भी बताना था कि अभी जैसे ये डॉक्टर ने फिजिकल्स के ऊपर दवाइयां काफी खाई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि फिजिकल्स इतने कॉमन होते हैं कि फिजिकल्स पर से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे ये माइंड सिम्टम्स बहुत काम में आते हैं, और यहाँ पे ही हमारा माइंड जो अप्रोच है वो ज्यादा रिफाइंड है, वो ज्यादा करेक्ट है, और वो ज्यादा एक्यूरेट है, जबकि फिजिकल्स आर फैक्ट्स। स्टिल इफ यू अंडरस्टैंड माइंड वेल, your results are much better because you hit the core. Hello learners, with our regular basic primary course coming to an end, we are now starting our basic advanced course 2025, which is a 3 months advanced course for all those who have done our BPC and also open for all those who want to enhance their knowledge. The course content would be in-depth knowledge about rubric application and remedies. Along with our regular Polycrest remedies, we will also learn how to reach rare remedies and apply them in our daily practice. We also study the applications and use of LM potencies in our practice. So please contact Dr. Ashok Avadia for more details or join our registration group as soon as possible. Thank you from Team HSH.